we are now going to start our the very first class of our journey, which is the income tax laws and practices, right? So since it's the very first class, I would like to give you the very brief of tax history, tax implications, why do we impose the taxes. So in the very first class, we will do the very basics of the tax, and I believe most of you will be able to relate with it, right? So I request all of you, in case if you have any doubt, anything you want to ask in between, you just interrupt me in between and ask anything. Feel free to ask me anything, whatever doubt you have, but make sure कि आप doubt के साथ class को log out ना करें. Doubts के साथ अपने सारे doubts यहीं clear करेंगे हम. और class का जो participation होगा, it has to be very frank participation. You may ask anything in any language, Hindi, English. These are the two languages I know. And आप इन दो लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, so we are now going to start with this. As I told you in the last class, I hope this screen, the paint screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So first of all, before talking about our subject, which is income tax law and practices, before talking about this subject, I normally start my income tax class with a very basic question, and the question is, what exactly is tax? What is tax? Any idea, class? Any general idea? What exactly is tax? Tax is a compulsory payment that general public made to the government. Okay, tax is a compulsory payment. Sakshi said it's a compulsory payment. Yes. Legally compulsory payment. Sir, a transport payment made to the government. Yes. So it is a payment, and the idea I have got from your answer, and I believe most of you would be in the same line that the three students have said that the tax is a compulsory payment. Yes. So when we talk about the tax, yes, it is a compulsory payment. ठीक है. टैक्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं इसके एक फॉर्मल डेफिनेशन विच इज द very well accepted definition of taxes, which is it is a compulsory it is a compulsory financial contribution. You may use the finance or monetary contribution. Both are same. It's a compulsory finance or monetary contribution imposed by a government, imposed by government to raise revenue, to raise revenue imposed on what? Imposed on, it might be imposed on income, it might be imposed on revenue, property, services, and so on. So it is, this definition is considered very well accepted definition of taxes. Now, if I break down this definition, we need to look at this. Tax is a compulsory financing payment. Why it is compulsory? Because it's a legal payment. If you are obliged to pay the taxes, it means you are bound to pay the taxes. So payment of the taxes provides this information that taxes, they are compulsory payment, means it has a legal framework, right? Taxes have the legal framework. Clear है class आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी Yes, sir. bound to pay, bound to pay. If qualified to pay, if qualified to pay. I'm not using any technical word as of now, but आपको धीरे धीरे सारी चीजें clear होंगी. If you are qualified to pay, then you are bound to pay.
It is imposed by a government. Yes, taxes are always by the central authority. Taxes by central authorities. The central authority could be anything. It could be municipal corporations as well, right? छोटे से छोटे लेवल पर आप देखें तो municipal corporation they also take a lot of type of different taxes like house property taxes, right? If I talk about the state government, they charge different taxes like SGST, state GST की हम बात कर सकते हैं. We can also talk about this. We can talk about the different like levies की हम बात कर सकते हैं, right? Now these are the taxes, and when it comes to the central government, it can be bifurcated into different type of taxes: income tax, different wealth tax could be the one, gift tax could be the one, right? Indirect taxes is a totally different aspect of the taxes. So ये दो चीजें हमें इस definition से clear हुई. First of all, it's a financing payment, which is a compulsory payment by the government, right? And they imposed on income, revenue, property, and the services, and many more things. They are basically when we talk about last part of the definition, which is this वाला part, ये वाला part. तो taxes किस किस चीज पे लगाए जा सकते हैं? Things, anything can be taxed. ध्यान रखना, anything can be taxed. अगर मैं एंशियंट टाइम की बात करूं इन यूरोपियन कंट्री, नॉट इन इंडिया, थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, बट इन यूरोपियन इकोनॉमीज दे यूज टू impose the taxes on sex services, right? So sex service, if you are having the sex with someone, it means you are obliged to pay the sex taxes. There were a lot of different type of taxes even in India. If I talk about, I'm not very sure whether you people have heard it or not. इंडिया में एक टाइम था और काफी पुराने टाइम की बात है, इन 17 और 1800 में आई वाज रीडिंग सम डॉक्यूमेंटेड थिंग्स रिलेटेड टू द टैक्सेस. विमेंस की ब्रेस्ट के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था. तो इस तरह के टैक्सेस की हम बात करते हैं आज के टाइम में. इट इज एक्चुअली वेरी ऑकवर्ड टू इवन लिसन दीज थिंग्स कि आप किसी के बॉडी पार्ट के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं या आप किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं. कहने का मतलब क्या है? व्हेन इट कम्स टू द टैक्सेस, यस, एनीथिंग कैन बी टैक्स्ड, राइट? एंड द डिस्क्रिशनरी पावर टू डिसाइड दिस इज टू द सेंट्रल अथॉरिटी. When I use the central authority, I meant the government, right? So normally आप जितने भी taxes के documents देखेंगे तो वहाँ पे हम सेंट्रल अथॉरिटी ही यूज वर्ड करते हैं, इसलिए आई एम यूजिंग द सेंट्रल अथॉरिटी. ये आपके अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट हो सकती है, या आपके कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, या आपकी सिविक सोसाइटीज हो सकती हैं, या आपके गवर्नमेंट स्टेट लेवल या पंचायत लेवल गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, या आपके सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हो सकती है. तो थिंग्स, एनीथिंग कैन बी टैक्स. देयरफॉर एक काफी फेमस कोड निकला इसी टैक्स से, जो कहा गया, देर आर टू थिंग्स इन सर्टेन इन लाइफ, देर आर टू थिंग्स आर सर्टेन इन लाइफ, टू थिंग्स आर सर्टेन इन लाइफ. One is death, and second one is taxes. Yes, class. So therefore, all we can observe is tax is actually one of the things you cannot escape. Directly, indirectly, we all are paying the taxes. If I ask you how many of you if there are 85 students in class, and if I ask you how many of you pay the taxes, most of you will not raise your hands because you believe that the tax is only what we pay from our pay from our income, right? If you are obliged to pay on our income on property, this is the only tax. No, my dear. जब हम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स सिर्फ एक ऐसी पेमेंट नहीं है जो आपकी इनकम पे आपको देनी होती है, या आप को आपकी प्रॉपर्टी पे आपको देनी है, या आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट पे देनी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव गॉट द गिफ्ट, आपको गिफ्ट के ऊपर टैक्स देना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स देना है. नो, taxes directly indirectly every single person on this planet is paying taxes in the form of direct or indirect taxes. Am I clear, class? सबको समझ आ रहा है?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. When it Yes, comes sir. to the taxes, there is no escape. There is no escape. Every single person is paying the same taxes. For example, if you are buying a matchbox, if you are buying any small to small FMCG product, for example, if you are buying chocolate, if the person who is having income of rupees just 5,000 per month, which is almost nothing, and the person who is having the turn of over 500 crore rupees, if they both buy the same product, क्या दोनों ही टैक्स दे रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. दोनों टैक्स दे रहे Yes, sir. हैं और सेम क्वांटम में दे रहे हैं. यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, Sir. सेम मनी Yes, sir. इज अ टैक्स. तो देयरफॉर ये कहना कि हम टैक्स पेयर हैं, ये लोग टैक्स पेयर नहीं है, इट इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन अबाउट द टैक्सेस. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अबाउट द टैक्सेस कि टैक्स है क्या. अब इससे हम आगे का डिस्कशन करेंगे. टैक्सों हमें समझ आया कि सर इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट, मींस इट हैज अ लीगल फ्रेमवर्क. इफ यू आर नॉट पेइंग द टैक्सेस, इफ यू आर बाउंड टू पे, बट इफ यू फेल टू पे, देन यू आर लायबल of any imprisonment, of any fine, or whatever your legal framework decides कि आपको फाइन देना है, पेमेंट देनी है, वो डिसाइड करता है, राइट. टैक्सेस कौन चार्ज करता है ये भी हमने देखा. साथ में हमने देखा कि टैक्सेस से क्या भागना आसान है. नो, टैक्सेस से भागना आसान नहीं है, क्योंकि टैक्सेस आर नोन एज दे आर यूनिवर्सल. देयर आर यूनिवर्सल. द क्वांटम में भी डिफरेंट, ऑब्वियसली. किसी कंट्रीज में टैक्स रेट ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में बिल्कुल कम हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की इनकम पर या सर्टेन टाइप की चीजों पर. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द टैक्सेस, यस, विदाउट टैक्सेस द गवर्नमेंट कैन नॉट इवन थिंक ऑफ रनिंग द कंट्री, राइट. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टैक्सेस आर यूनिवर्स. एम आई क्लियर दिस क्लास? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Just do one thing. The CR of any student, specifically if I request the CR, just take the screenshot of it. sir, taken. Okay, good, very good. क्योंकि आपको नोट्स के लिए थोड़ा हेल्प मिल जाएगी अगर आप आगे से आगे पढ़ेंगे. Now, please mind this CT की कुकर की CT. I cannot do much. आवाज तो नहीं आ रही, आपको आ रही है बैकग्राउंड? सर कोई इशू नहीं है. आ आ रही रही है, but थी it's सर, अब okay. ठीक है. ओके, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा खाना बन रहा है. Now, सर हम अच्छे बच्चे हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं. okay, very good. That's so nice of you all. Now, next. Once we get the idea of the taxes, now we need to understand the very important question we have to ask ourselves. Okay, taxes are clear. We have got to know that taxes are universal. There is no escape from the taxes. Taxes are always compulsory. Taxes are imposed by the every single level of the government. We all know this. But when it comes to this question, why do we impose the taxes? Why do we impose taxes? Any idea? सर, So, सो दैट जो इनकम ज्यादा इनकम वाले जो लोग हैं उनसे वो उन पे टैक्स लगा के और वो मतलब जो लोअर क्लास पीपल है उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट करना, सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो इक्वल सके. डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, ठीक है. तो ये एक रीजन है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, गुड. developing the country's It is, infrastructure and इकोनॉमिक all. एंड सोशल yeah, स्टेबिलिटी it के is a लिए. source of बेसिक revenue for the सोर्स ऑफ इनकम government. फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. वेरी गुड. रिवेन्यू जनरेट करने के लिए वन ऑफ द आंसर वाज सोशियो इकोनॉमिक For the ऑब्जेक्टिव, राइट. development of the country. ओके, गुड. सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, गुड. It helps also in utilizing it for the defense. यस, सो बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में उसे इंक्लूड किया जा सकता है, राइट. ठीक है. नाउ To ये सारे तो properly run all the सेक्टर government हम्म, authorities. ओके, ठीक है, ठीक है.
So, overall, I can say, why do we impose the taxes? The answer is because we have to have the equal distribution of the income. The people, those who have been less income, we should get more from those who are having more income, and we should get give it back to the people, those who are non-havers. ठीक है? उसके बाद हमने बात की रेवेन्यू जनरेशन के लिए, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए। क्वेश्चन तो हमें समझ आया कि भाई टैक्सेस इसलिए कलेक्ट किए जाते हैं कि आप रेवेन्यू अर्न कर सकें। Because when we talk about the government has no other option. Government has no printing press. They have actually the printing press, but they cannot print the money like nobody's business. ऐसा नहीं कि वो पागलों की तरह से पैसा पैसा रेस करते रहेंगे मार्केट में। अगर ऐसा करेंगे तो जर्मनी एंड जिम्बाब्वे वाला केस बन जाएगा इंडिया के अंदर भी, ठीक है, या किसी भी कंट्री के अंदर। तो कंट्रीज, जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, हाउ डू वी गेट दिस मनी, how people get the different incomes, how we people get the development project done. So it is mainly because of the taxes, because tax is the only source, or it is the main source of government's revenue. ये तो समझ आया। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों ना करें, वी जस्ट मेक अ कलेक्टिव सोसाइटी। एक हम कलेक्टिव सोसाइटी की बात करते हैं। Why should we pay the tax to the government? The next question is this only. We make a collective society, and in this collective society we should all contribute, and whatever thing we see, it needs repairs, it needs any development, we will do this, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। There are 10 houses in an apartment, and they have decided कि ठीक है, we will not pay any tax to the government, no taxes to the government। अब मान लेते हैं कि जो अपार्टमेंट के जो बाहर वाली रोड है वो खराब हो गई, ठीक है, यानी काफी टाइम से यूटिलाइज हो रही है, एंड इट इज फाइनली गेट डिस्ट्रॉयड, एंड it is actually very difficult for you people, or the people to the houses, those who are using it, right? Now, some of the intellect member, what they have done, they had decided to collect some money, ठीक है, कलेक्ट कर रहे हैं। कैसा करते हैं, कलेक्ट करके रोड बनवा देते हैं, क्योंकि यूज तो हर कोई करता है ना, कलेक्ट कर रहे हैं, और दे हैव टू कंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट द रोड, रिकंस्ट्रक्ट रोड। तो क्या दिक्कत है अगर इस तरह का, Excuse me, sir. Can you repeat? Your voice is breaking. is it breaking? Am I clear, class? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए एक अपार्टमेंट में 10 घर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट को कोई टैक्सेस नहीं देने वाले, हम जो भी करेंगे आपस में कलेक्ट करेंगे, और जो भी काम होगा आपस में कलेक्ट करके, यानी पैसा रेस करके हम क्या करेंगे, उस काम को कर लेंगे, यानी एक तरह से क्राउड फंडिंग करके हम उस काम को कर लेंगे, ठीक है। सो इज इट easiest way, yes or no? Is it easier ways to done things in a proper way? Don't you think this? Yes, sir. Right? Yes. हाँ, देखो वैसे तो कितना टीडियस टास्क है कि आप पहले गवर्नमेंट को टैक्स दो, गवर्नमेंट को टैक्स दो, उसके बाद पता लगता है कि बड़े बड़े स्कैम्स हो गए। हमने गवर्नमेंट को 1 रुपये का टैक्स दिया, गवर्नमेंट हमारे ऊपर 25 पैसा खर्च कर रही है। तो इट्स अ वेरी टीडियस एंड वेरी हेक्टिक, एंड इट इज वेरी वेरी ट्रांसफिलेट process, that we are not able to see how much money we are going to pay to the government and how much money we are receiving, right? So this might be one of the way by which you can easily incorporate, you can enhance your development in your area or in your community, right? By just collecting the monies, right? आप क्या गए, अब आपने दो लोगों ने डिसाइड किया कि आपको पैसा इकट्ठा करना है, आप पैसा इकट्ठा करने के लिए गए। अब बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या क्या क्या हमने फायदा तो देखा, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स। Sir, सर yes, लोग we मना are कर not सकते making. हम्म, So we are not बोलिए। making this on macro aspect. Like if we will have problems that why everyone is using, only we are constructing the roads, only our people can use. ओके,
ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज और इम्प्लीमेंट ऑन अ मैक्रो लेवल, राइट? बट एट द सेम टाइम मान लीजिए आप पैसा इकट्ठा करने गए, आप 5 में से 10 में से 6 लोगों ने पैसा दे दिया, 4 लोग बोलते हैं हम तो रोड का यूज ही नहीं करते। अब भाई रोड का यूज नहीं करते तो जाते कैसे हैं? बोलते हैं हम तो उड़कर जाते हैं, राइट? तो हम तो यूज नहीं करते और पूरे दिन उनका सारा काम रोड के ऊपर है, गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी है, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू पे एनीथिंग। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, what is, if you look at the definition, Texas definition, it's a compulsory payment, but here the compulsory part is missing. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Here the Yes, compulsory sir. part is Yes, missing sir. because it is the crowdfunding. And why it is not compulsory? It may be compulsory, but if 4 families they decided not to pay anything, you have no danda power at all, right? You have no laws and authorities power to collect the taxes. That is why this system tend to fail when it grows to a larger level. ठीक है, छोटे लेवल पे तो समझ आ जाता है कि 10 घर हैं, 5 घर हैं, कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन when it comes to the larger level, it is actually very very tedious project because of the only reason, डंडा पावर। डंडा पावर का मतलब लॉ एंड ऑर्डर। We don't have danda power, right? We cannot prosecute anyone, we cannot imprison anyone, we cannot fine anyone. Yes or no, class? Yes, So sir. this is something which is missing here. That is why this concept is failed. देखिए जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये टैक्स का इवोल्यूशन है। टैक्स इसी तरह से आया। पहले फैमिलीज या जब सोसाइटी जब डेवलप होना स्टार्ट हुई, व्हेन दे रियलाइज्ड, व्हेन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट द गवर्नमेंट, देयर वाज छोटे छोटे, आप कह सकते हैं कबीले हुआ करते थे। एंड कबीला सरदार वो सब बनने से पहले, व्हेन दे वर फैमिलीज एंड दे यूज्ड टू डिसाइड इन दिस वे ओनली कि दे विल रेज, मनी नहीं हुआ करता था, देयर वाज अ बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज, राइट? बट धीरे धीरे दे रियलाइज दैट दिस सिस्टम इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. They are the families, they are the people, those who will not incorporate, at the same time they will use the services every single time, right? जैसे कि होता है ना, जैसे आप में से, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद इट, जागरण में कभी माता का जागरण के लिए पहले पहले से पहले क्या होता था, डोर नॉक करके पैसा लेने के लिए आते थे, राइट? एंड दे आस्क कि भाई माता का जागरण हो रहा है एंड आप थोड़ा पैसे दे दीजिए। तो बोला कि हम तो माता के जागरण में जाते ही नहीं है। पर जब जागरण होता है तो सबसे पहले वही है जो मतलब सुबह सुबह 5 बजे हलवा और क्या होता है, हलवा और हलवा, द सेकंड थिंग इज हलवा। सर, हलवा पूरी चना। हाँ हाँ, हलवा पूरी चने का प्रसाद की लाइन में सबसे आगे लगे हुए हैं, राइट? तो इट इज समथिंग बिकॉज ऑब्वियसली it is a non-cooperation from the different part of the society. That is why this tax evolution comes across around, I mean, इन लास्ट 400 ईयर्स, ठीक है? तो 400 साल में टैक्स का कॉन्सेप्ट इस तरह से आया। टैक्स पहले भी हुआ करते थे, बट छोटे छोटे लेवल पे हुआ करते थे। बट जैसे जैसे इकोनॉमी का साइज इंक्रीज होने लगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी डेवलप होना जरूरी थी, बिकॉज दे हैव दिस पावर विच इज नोन एज द LNO, which is law and order power. Because because the person or the government, those who will have the law and order power, only then they can prosecute and make the people to pay the taxes. I hope the tax definition is correctly justified from this example, Yes, sir. right? Yes, sir. अब हमें समझ Yes, sir. आया कि क्यों ये कंपलसरी पेमेंट है, क्योंकि इसे कंपलसरी नहीं किया जाएगा तो 99% ऑफ द पॉपुलेशन दे विल नॉट पे द टैक्सेस आउट ऑफ दोज हु पे इट, राइट? तो ये हमें समझ आया, टैक्सेस क्यों पे किए जाने चाहिए ना। आगे हम बात Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, I have out of the box question. Can I ask it? हाँ हाँ श्योर। सर, अगर हम कहते हैं लोगों को कि टैक्स पे करो, राइट? कि अब जो रिच पीपल हैं जिनकी इनकम ऑलरेडी गुड है, दे कैन पे इट, राइट? बट द पीपल हु आर नॉट सो गुड एंड जिनकी इनकम भी अच्छी नहीं है, दे कैन नॉट पे इट एंड दे इट इज अ बर्डन ऑन देम. सो इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग द मनी फ्रॉम द पीपल, वी कैन डू दैट कि हम एक बॉन्ड का कंसेप्ट कर सकते हैं कि हम लोगों से कह सकते हैं कि आप अभी इन्वेस्ट करें, अभी इस चीज के अंदर, लाइक जितना भी आपका पार्ट है इनकम का, गिव इट टू अस, वी आर डूइंग इट टू डेवलपमेंट पर्पजेस एंड आफ्टर फ्यू इयर्स, जैसे बॉन्ड होता है बेसिकली, कि हम आपको इसका रिटर्न देंगे विद प्रिंसिपल अमाउंट. तो इट कैन, मतलब एक तरह से लोगों पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और उसके बाद जब एक इनकम आएगी उनके पास, आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम, इट विल बी अ बेनिफिट फॉर देम ऑल्सो. Okay, correct. I get your question, but at the same time, Bakshi, when it comes to this, if you are asking people to invest, again, there is no compulsion in investment. I may invest my money or not.
right? It's fully my discretion. Are you getting my point? तो जब हम बात करते हैं टैक्सेस की, क्यों जरूरी हो जाता है टैक्सेस कलेक्ट करना? क्योंकि जब हम बात करते हैं कुछ इम्पैक्ट्स, अब उन इम्पैक्ट टैक्स इम्पैक्ट्स को भी समझना जरूरी है इस डेफिनेशन के साथ. फॉर एग्जाम्पल द So, गवर्नमेंट. यस, हाँ जी बोलिए. the thing she mentioned, it's a part of deductions of the taxes. Like we can raise our amount so that our income shows less, and we can give less tax amount. हाँ, दैट इज अ डिफरेंट वे, बट एट द सेम टाइम आप टैक्स पे कर रहे हैं, उसी में तो आप डिडक्शन देंगे ना. अगर आपकी कुछ इनकम होगी, ओनली देन यू विल गेट द डिडक्शन, उसके बाद ही आपको कुछ वो डिडक्शन का फायदा मिलेगा. यस और नो? Okay, sir. हाँ. फर्स्ट प्लेस में हम ये जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती, इन्वेस्ट कर ले, सीधा इन्वेस्ट करवा दे लोगों से, और उसके बाद जो भी रिटर्न आएगा वो लोगों को दे दे, ठीक है. लेकिन जब आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, देखिए दो चीजें. गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है. सबसे पहले गवर्नमेंट को पैसा चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राइट? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. And we all know the government administration, government runs their, I mean, they run the office like president office or any sectorial level, state level या central level पे government spend a lot of money on administrations. उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट का डिफेंस. They spend a lot of money on defense of the country. Yes, class? Yes. Yes, sir. उसके बाद आ Yes. जाता है social. For, So for development. Yes. managing all the government authorities or the government the industries. तो सोशल एक्सपेंडिचर में उसे इंक्लूड किया जा सकता है. सोशल एक्सपेंडिचर का मतलब सोसाइटी के लिए, राइट? इसे सोशल एक्सपेंडिचर कहेंगे. नाउ लुक एट दिस. ये सारा पैसा गवर्नमेंट को चाहिए. गवर्नमेंट को एवरी सिंगल डे दे रिक्वायर मनी, एंड दे रिक्वायर, they have to decide how much money we can spend on defense, on administration and social expenditure. बट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात, कि इन केस अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने कर दे सारे पैसे को, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम विद द इन्वेस्टमेंट इज नॉन कंपल्जन. नॉन कंपल्जन, नॉन कंपल्जन इसलिए क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं है. क्या टैक्सेस के बारे में? यस, एग्जैक्टली. टैक्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात की गई है कि गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करने का राइट गवर्नमेंट अपने पास रखती है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉन कंपल्जन. आप किसी को कंपल्शन में नहीं रख सकते, या आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा या नहीं करना होगा. सेकेंड थिंग, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज लॉन्ग रन इन नेचर. यस और नो क्लास? लॉन्ग रन नेचर. Yes, sir. The problem with these expenditures, they are incurring, they are daily incurring expenditures. Administration पे खर्चा, defense पे खर्चा, and social expenditure पे खर्चा. At the same time, investment, they are also have the risky nature. They also have the risky nature. Therefore, instead of asking any kind of investment, what the student had hypothetically assumed अभी, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बैठ सकता. इसलिए वी हैव द टैक्सेस सिस्टम. टैक्सेस इज नथिंग बट इट इज समथिंग दिस. वी हैव द गवर्नमेंट, इट gets money from the society. Yes, class? It takes Yes. money in the society and it give it back to the society. But once it takes money from the society, then it decides the allocation, reallocation of that money. Yes or no, class? Yes. यानी जब देने की बारी आएगी तो क्या करेगी, उसको रीएलोकेट करके देगी. ये बहुत एक ऐसा एक सिंपल से एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल वी आर 90 टोटल एंड आई आस्क यू ऑल टू पे whatever amount you can pay, whatever amount you can pay, राइट? मैं आपको ऑब्लिगेशन कर रहा हूँ कि पे करना जरूरी है, बट जो भी आपकी फैमिली इनकम है या आपकी जो इच्छा शक्ति है, जो आप वॉलंटरी आप पे करना चाहते हैं, यू कैन पे दैट. मेरे पास पैसा आया आप लोगों से. सम ऑफ यू आर इन गुड कंडीशन टू पे अ गुड अमाउंट टू मी, एंड सम ऑफ यू माइट नॉट बी इन अ गुड कंडीशन, राइट? तो व्हेन आई गेट दैट मनी इनडायरेक्टली, मैं मुझे आपको मनी वापस करनी है, बट एट द सेम टाइम नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रीएलोकेट. मान लेते हैं देयर इज अ स्टूडेंट एक्स, and the ex student, she gave me a very larger sum of money because she is having a very good family income, she is having her own income as well. Now
अब यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे एक लार्जर सन ऑफ मनी दिया, मुझे वापस तो करना है सोसाइटी को, तो वापस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको भी मिलेगा, बट वो प्रोपोर्शन अलग हो जाएगा। यानी रीएलोकेशन किस बेस पर होगा? सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर होना चाहिए। यस और नो क्लास? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Taxes is nothing but it is the indirect way of reallocation of money. First, government receive, then they decide that we are now going to reallocate the money. It's a kind of a Robin Hood way of doing the things. Robin Hood, what he does, he used to take the money from all the rich and he used to pay it to the poor. But it is not exactly the Robin Hood way. गवर्नमेंट हर किसी से टैक्स कलेक्ट करती है, लेकिन बाद में डिसाइड करती है कि किसको कितना देना है, यानी कि सोसाइटी में आपके रिसोर्सेज का एलोकेशन, रिसोर्सेज एलोकेशन कैसा होगा वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। दैट इज व्हाई द टैक्सेस आर इम्पोर्टेंट। यस और नो क्लास? Yes, sir. Yes, sir. आई होप ये आप सबको क्लियर है कि व्हाई टैक्सेस आर इम्पोर्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Yes, वेरी sir. गुड। नाउ वी विल कम टू द अनदर पार्ट ऑफ दिस थियरी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस वी हैव। ठीक है, उसके रीजंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हम बात करें। देखिए, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर डाउट्स in case if things are not clear to you. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, we have Shrey, Bot and Pratham Goyal as well. सर इनकी ना क्लास लीव हो गई थी। हाँ जी। सर इनकी Sir, ना they were क्लास trying लीव to हो गई थी बीच में अभी। revise right अच्छा now. अच्छा, okay. Now I'm now going to change my screen. Shall I? Yes, sir. Yes, यस sir. Yes, sir. Next. Tanya University. I think she was not there earlier, right? No, sir, she was there. She asked a question. Okay. Now, now we are now going to talk about the type of taxes we have. And I believe and I feel that most of you must be aware of the type of taxes. Yes, class? Yes, sir. Direct and Yes, indirect taxes. Yes. So we have direct and indirect taxes. ठीक है। मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, आई आल्सो लेट यू नो द प्रॉब्लम्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ दीस टैक्सेस। Now, first of all, if I talk about direct taxes and indirect taxes, first of all, if I talk about indirect taxes, आपने CST का नाम सुना होगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। You Yes, must sir. have heard about VAT, value added taxes. आपने सुना होगा एक्साइज ड्यूटीज के बारे में। यस। Yes, Yes, sir. sir. आपने कस्टम के बारे Custom duty. में। यस। आपने सुना होगा सर्विस टैक्स के GST. बारे में। यस, सर्विस टैक्स। So these taxes, they are primarily part of or component of indirect taxes in India. They were the primarily part of the taxes in our country. Yes, CST mainly खत्म हो चुका है, वेट कुछ पोर्शन पर है। If I talk about the petroleum product, excise duty to some extent it is in present, it is there. Customs है, सर्विस टैक्स नहीं है, पूरी तरह से abolish हो चुका है। तो all we can say is instead of all these taxes, we have two taxes in place, which is this. As of now, we have in indirect tax category, we have custom duties and we have goods and services tax. Goods and services tax, which is GST. Here it comes. Yes, sir. sir.
तो अब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंडिया में जो प्रीडोमिनेंटली टाइप ऑफ टैक्सेस के बारे में सुनते हैं, दे आर दीज टू टैक्सेस. थर्ड ईयर में भी जब आप जाएंगे ईयर 6 सेमेस्टर में, you will study these two taxes, which is the goods and services taxes and custom duties. ये आपको दो ही टैक्स पढ़ने होंगे in indirect taxes. So we have these two taxes, custom duties and goods and services. यानी before, on or after, on or after 1st जुलाई 2017 के बाद से इंडिया में दो ही मेन इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक. नाउ व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट टैक्सेस, when we talk about the direct taxes, income tax. Yes, class. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, कभी आपने गिफ्ट टैक्स के बारे में सुना है? Yes, sir. थोड़ी देर पहले आपने ही Yes, sir. बताया था. गुड. इसके So अलावा wealth tax. वेल्थ टैक्स के बारे में भी सुना होगा. ओके, ठीक है. अब आपको इन टैक्सेस के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज देखिए, जो गिफ्ट टैक्स के जितने भी प्रोविजन, गिफ्ट टैक्स के, इन 1998 provisions of gift taxes, they were already subsumed in income tax. यानी गिफ्ट टैक्स अब आप इनकम टैक्स के अंदर ही पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ओके क्लास, दिस इज द फिफ्थ हेड ऑफ इनकम. ठीक है. यस. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पहले गिफ्ट टैक्स एक अलग एक्ट हुआ करता था, बट एज ऑफ नाउ आफ्टर 2000 आफ्टर 1998 the provisions of gift taxes, they were subsumed in income tax. Now we have the income tax only for income as well as for the gift. Wealth tax. Wealth tax 2015 if I am not mistaken, एक बार मैं चेक भी कर लूंगा. जहां तक 2015 में इट वाज अबॉलिश्ड, वेल्थ टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया था. ठीक है. तो यानी कि अब हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे वी हैव ओनली वन टैक्स विच इज इनकम टैक्स. राइट. यस क्लास. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So direct taxes and indirect taxes, we have the different authorities for the direct taxes and indirect taxes. Okay. So if I talk about like direct taxes की authority, which is CBDT, Central Board of Direct Taxes. If I talk about this, we have CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Custom, right? IC, yes, is indirect taxes and custom. Am I clear, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक. अब हम बात कर सकते हैं कि what is the need to have these two different type of bodies or authorities? Why we have the CBIC in place and the CBDT, which is Central Board of Direct Taxes? क्यों हमारे पास एक ही तरह के टैक्स नहीं हो सकते? क्यों हमारे पास अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं? Can you tell me the reason behind this? Why do we have these type of two different type of taxes? Sir, indirect tax is paid on daily day-to-day items, so it will be like very difficult to have direct tax on them. Okay. Excuse me, ये sir. हाँ बोलिए. Yeah, so I just checked it. The wealth tax was abolished in 2016. अच्छा, in 2016. Okay. Yes, sir. I was a little confused. That's why I said I'm not very sure. Yes, 2016. Fine. Good. Okay. So, see, when we talk about the indirect and direct taxes, both have the different approach, both have the different objectives. They serve the different objectives, and the way why we impose these two taxes have a totally different objective from each other. यानी हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने का रीजन अलग है, डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने का रीजन अलग है. जब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट टैक्सेस की, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस Chaya, your mic is on.
छाया साथ में टीवी भी देख रहे होगे. She has left the meeting. Okay, fine. Now, so I was talking about the direct taxes first of all. When it comes to the direct taxes, the collections of direct taxes, the collection of taxes, sometime and most of the time the collections are lesser than the expenditure to collect these taxes. यानी कि टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने का खर्चा ज्यादा है डायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शन से. क्वेश्चन ये उठता है, if the direct taxes are so expensive to collect, why we are collecting them in very first place? Why shouldn't we abolish it? And this question has been raised in parliament so many times. पार्लियामेंट में काफी बार ये सवाल आया कि क्यों हम डायरेक्ट टैक्सेस को हटा ना दें, क्योंकि इसका जो कलेक्शन है, कलेक्शन इतना नहीं जितना उसके ऊपर खर्चा हो जाता है कलेक्ट करने का. फिर भी गवर्नमेंट इज वेरी फर्म ऑन इट दैट वी आर नॉट गोइंग टू अबॉलिश द डायरेक्ट टैक्सेस. क्या इसके पीछे रीजन है, बता सकते हैं? डिस्टिंग्विश करना एक रिच और पुअर के बीच में. यस, बोले सौरभ मिश्रा. यस यस सौरभ बोले. सर सर इंडिया नथिंग सर, गलती से हो गया था. हाँ जी, अच्छा हो गया, कोई बात नहीं. डिस्टिंग्विश करना रिच और पुअर के बीच में. वेरी गुड प्रथम. दिस इज द सर ओनली ऑब्जेक्टिव. हाँ दिव्या बोले. सर इंडिया हैज अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, मतलब उसमें रिचर डोंट गेट रिचर एंड पुअरर डोंट गेट पुअरर, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स. You are partially correct, Divya, when we say about the direct taxes are always progressive in nature. Direct taxes are not regressive in nature. आप किसी भी कंट्री के डायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम की बात करेंगे, दे आर ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन नेचर. व्हाट डज इट मीन बाय द प्रोग्रेसिव टैक्सेस? व्हेन आई से प्रोग्रेसिव, इट मींस जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको टैक्स भी ज्यादा देना होता है. यस और नो दिव्या? यस सर. तो डायरेक्ट टैक्सेस की जो क्वालिटी है वो यही है, इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस पिक्चर में रहना हमेशा जरूरी है. द ऑब्जेक्टिव हमें याद रखना है, डायरेक्ट टैक्सेस का ऑब्जेक्टिव अलग है इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऑब्जेक्टिव से. व्हेन यू टॉक अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस ऑब्जेक्टिव, इट सिंपली मींस टू ब्रिज द गैप, टू ब्रिज द गैप between poor and rich, rich और havers और non havers. समझ आया सबको इस क्लास? यस सर. Yes, sir. इसलिए इनके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हुए भी इन टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है फॉर रीअलोकेशन पर्पस, फॉर रीअलोकेशन. ठीक है ना? बट व्हेन इट कम्स टू द डायरेक्ट टैक्सेस, देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम विद द डायरेक्ट टैक्स. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मेजर प्रॉब्लम विद डायरेक्ट टैक्सेस? सोचिए, 84 83 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो आई बिलीव आपका कोई सोच सकता है इसके बारे में. सर टैक्स इवेजन. टैक्स इवेजन. तो क्या टैक्स इवेजन ज्यादा है डायरेक्ट टैक्सेस के केस में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. व्हेन इट So कम्स टू, many people show their हाँ जी income. जय बोले. So I was just saying, black money case, like show their income less in order to pay less taxes. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू इंडिया स्पेसिफिक, मैं आपको इंडिया के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि व्हाई डायरेक्ट टैक्सेस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. व्हाई गवर्नमेंट हैज ट्राइड अ लॉट टू increase the circle of the direct taxes in our country, right? Despite how many people in our country pay the direct taxes. तो ये क्वेश्चन बार बार उठता है कि कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. तो हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ 2 से 3% लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. इसका मतलब पे कितने करते होंगे? इट इज इवन लेसर देन 2 to 3%. इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना और इनकम टैक्स पे करना बोथ आर डिफरेंट थिंग, राइट? सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू 2 to 3%, सिर्फ इतने ही लोग हमारे देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. इट सिंपली शोज दैट देयर इज द वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज अनफॉर्मलाइज्ड. यस और नो? Unformalized. Yes, sir. So we are formal, we are not a very major formal economy, right? We are unformal economy.
अनफॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी का टैक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इकोनॉमी का अगर ज्यादातर पार्ट किसी कंट्री का फॉर्मल फॉर्मलाइजेशन के अंदर नहीं आता, यानी ना तो उस इनकम के बारे में कोई ट्रेस है, ना ही उस जॉब के बारे में ट्रेस है, और द जॉब इज नॉट फॉर्मल, obviously that part will be considered as unformalized, and India is one of the biggest unformalized economy across the world. यानी हम सबसे बड़े अनफॉर्मलाइज इकोनॉमी। आप इस डेटा को इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप मोमोज खाने के लिए जाते हैं, सबको पसंद है मोमोज, ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो पसंद होते ही है, yes or no? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. So we always try to find the shop which provides one of the tastiest momos in our area, right? So मैं कल ही मैंने I had momos, so I always go to a shop which is actually one of the famous in my area, and that's why I just go there and I have some time. तो उस केस में आपने देखा, कभी ऑब्जर्व किया होगा, दो लड़के होंगे या तीन लड़के होते हैं, ज्यादातर लड़के ही होते हैं मोमो शॉप पर, राइट? कोई छोटा सा अपना स्टॉल लगाते हैं और वहां से हमें मोमोज दे रहे होते हैं, एंड समटाइम इफ यू पीपल वंडर दैट दे आर एक्चुअली हैविंग द वेरी हाई लेवल ऑफ सेल्स, राइट? भीड़ लगी रहती है, बट स्टिल समटाइम वी वंडर वेदर दे रियली पे द टैक्सेस और नॉट, राइट? कहने का मतलब क्या है, ऐसे केसेस में आप मोमोज वाले की बात कर लीजिए, आप छोटे मोटे फास्ट फूड के शॉप की बात कर लीजिए, देयर इज अ वेरी फेमस शॉप इन माय द्वारका एरिया, छोले भटूरे वाले एक है, वहाँ पे लाइन लगती है, राइट? एंड दे जस्ट हैव अ वेरी टेम्पररी सेटअप, होता है ना, बहुत छोटा सा टेम्पररी सेटअप है बाहर लगाया हुआ है एक शॉप के, and he is just selling out to the people, and it takes at least 20 to 25 minutes to pass that queue, right? So sometimes you wonder कि these people are having the very high level of income, still they क्या ये सच में टैक्स पे करते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में दे डू नॉट पे द टैक्सेस, इवन इफ यू आस्क देम whether you people really pay the taxes, they would say, what they will say, sir हम कौन सा ऑफिस जाते हैं, राइट? हमारी कौन सी बड़ी जॉब है, हमारा तो छोटा सा काम है। दैट छोटा का काम, दैट छोटा सा काम मे गिव यू द मोर देन 1 लाख रुपीज ऑफ इनकम और द प्रॉफिट वट एवर इट इज, राइट? कहने का मतलब क्या, हमारी इकोनॉमी में इस तरह के छोटे छोटे सेटअप्स काफी हैं, और उस वजह से वी हैव अ वेरी वेरी स्मॉल formal economy, and therefore most of the people those who are supposed to pay taxes they do not pay the taxes, ठीक है? तो just because of this फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी को जितना कम होगा, यानी अनफॉर्मलाइजेशन जितना ज्यादा होगा, डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन उतना ही कम होगा। इस क्लास समझ आया है एग्जांपल आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मोमोज वाले एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा, मोमोज या फास्ट फूड शॉप्स जो होती हैं Yes, sir. ज्यादातर केसेस में, if Yes. you are not visiting the very fancy restaurants, that's a different thing. फैंसी रेस्टोरेंट्स में तो अलग केस होता है कि दे चार्ज अ वेरी हाई प्राइस एट द सेम टाइम, और चीज़ों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, राइट? 4 या 5 गुना प्राइसेस होते हैं उन फैंसी रेस्टोरेंट्स में, दे चार्ज जीएसटी या IGST एंड CGST एज वेल। तो कहने का मतलब है कि ऐसी जो हमारी इकोनॉमी है, फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी इज वेरी वेरी एट अ वेरी स्मॉल लेवल, therefore the direct taxes have the major issues that they have the very less coverage, इसलिए लेस कवरेज नहीं कि गवर्नमेंट के पास पैसा, लोगों के पास पैसा नहीं है, लेस कवरेज इसलिए बिकॉज द लीकेज ऑफ टैक्सेस इज वेरी हाई, यानी इवेजन ऑफ टैक्सेस आर वेरी हाई, टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। यस, so this is the major problem with the direct taxes. Every country, specifically if I talk about the underdeveloped economy में मेन प्रॉब्लम यही होती है कि वहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन काफी कम है। अब गवर्नमेंट के साथ सामने प्रॉब्लम क्या है कि इफ दे इंक्रीज द डायरेक्ट टैक्सेस, द बेस ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जांपल अभी 2 से 3% लोग हैं इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स मान लेते पे ही कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट से 10% भी कर दे, इसका मतलब है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Indirect taxes, they are regressive in nature, they are regressive in nature। अमित, अमित, so they are regressive in nature, am I clear class? Yes, sir. Right, so
रिग्रेसिव नेचर का मेन प्रॉब्लम क्या है? इनकी इनका लिमिटेंस यानी कवरेज एरिया इज वेरी वास्ट. Every single person is paying the taxes without realizing it. They pay. If I bought anything from the market, then I am paying directly, indirectly. Even if I pay, for example, if even if I buy this what momos, I'm paying directly indirect taxes on it. The raw material, the ingredient which are included in that momos or any fast food or anything, right? I'm directly indirectly paying taxes without even realizing it. कहने का मतलब है indirect taxes के साथ अच्छी बात यह है कि they have the very highest coverage. In India, indirect taxes have 98% coverage, which is almost 100%, almost 100%. But at the same time, they are regressive in nature. गरीब के ऊपर भी उतना मार पड़ रही है जितना अमीर के ऊपर मार पड़ रही है. देखा जाए गरीब के ऊपर इनडायरेक्टली ज्यादा मार पड़ती है टैक्स की. तो इसलिए किसी भी कंट्री का अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में भी आप देखें, indirect taxes are more or less very high and direct taxes have less coverage, right? तो इंडिया is also having the same characteristics. हमारे indirect taxes बहुत ज्यादा हैं, लेकिन direct taxes at the same time उनकी coverage कम. ठीक है क्लास? हम्म. Yes, sir. Yes, sir. जी सर. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, very good. Okay, so ये तो हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हुई. नाउ next class, we have our next class today only at 1:30, right? Yes, sir. Divya? Yes, sir. At 1:30. Yes, So sir. what we can do, we will continue our discussion at 1:30 only. Would it be fine? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो Yes, इससे sir. आगे हम बात करेंगे. अब हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे. ये तो मैंने आपको एक, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव विदाउट clearing the basis of taxes, I cannot start my classes. And that's why I just cleared the basis. Why do we have the taxes in place? What are the different types of taxes we have? What are the objectives? And what are the problem with these taxes? We talked about everything. Now, next class जो हमारी 1:30 होगी, we will now talk about the different concepts from section 1 of the income tax. यानी मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा आपको इनकम टैक्स पढ़ाने का, मेरा सेक्शन के हिसाब से रहता है. And let me tell you one thing, when you read income tax or any act, specifically revenue act, income tax भी revenue act है, right? तो अगर आप सेक्शन से पढ़ते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूटी मिलती है, और वो कॉन्टिन्यूटी इस तरह की होती है कि आपको चीजें याद रखने की कम जरूरत होती है अगर आपको सेक्शंस क्लियर है. तो मैं आपको सेक्शन से, मैं हमेशा सेक्शन से ही पढ़ाना पसंद करता हूँ. सिंस इट्स अ बीकॉम ऑनर्स, तो सेक्शन से पढ़ाना इंपॉर्टेंट हो भी जाता है. ठीक. तो एक मिनट. Yes. So, how many of you find this class useful? समझ आया सबको आज? सब Yes, कुछ sir. clear? Yes, Yes. sir. Yes sir. Absolutely. Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. कोई ऐसा Yes, नहीं sir. लगता है कि इस क्लास में Yes, बॉयज sir. आंसर नहीं कर रहे हैं? भाई बॉयज आप लोग भी आंसर कीजिए कि किया कीजिए. अच्छा आ रहे हैं मेरे पास. यस यस दिव्यांश. ओके फाइन गुड वेरी गुड. गुड. ठीक है. In second class we will start with sections and बहुत important होने वाला है next class का discussion. Okay. I'll take your attendance in second lecture only, right? दोनों क्लास Okay, के sir. साथ ही Okay, आपकी sir. attendance है. Thank you. You may all leave now. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, Thank sir. you sir. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Excuse me, Excuse me, sir. sir. Yes. हाँ जी बोलो. Sir, would you be sharing the recording with us? I will not share the recording to everyone. Those who will be regular in my class, in case if they miss any one of the class, they will directly talk to me and I'll provide the link. Sir, actually, I have a problem. I'm preparing for government exams and I'm taking coaching for it. Okay. So my classes start at 1:30 every day. And Mhm. on Thursday and Friday, we have class with you at the same time. Okay.
Mm-hmm. So it's clashing with your class. So I'm requesting if you could provide me with the recording. So how many of the classes you won't be able to take? So the Thursday and Friday ones, only the ones at 1:30. Okay, and what about other days? Would you be regular in those classes? Yes, sir. Yes, sir. ओके आंचल तो अगर आप रेगुलर रहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ दोज 2 days. ठीक है. Okay, sir. हाँ तो आई होप यू विल हैव माय कांटेक्ट नंबर ना. Yes, sir. I'll take it from Khushi. हाँ तो आज मैं क्लास में भी बता दूंगा जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी. ठीक है. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I had one doubt. It's Hmm. kind of abstract, but I was hoping if you could clear that. Yes बच्चे. सर डायरेक्ट टैक्सेस एंड रियल एस्टेट टैक्सेस, जैसे अब आप जब आप घर खरीदते हो तो जो टैक्सेस लगते हैं वो डायरेक्ट होते हैं ना,